Right, students, going to start our discussion about a very important chapter, or we can say the most important chapter of the inorganic chemistry for your class 11th as well as class 12th. This is your redox reactions. Okay, as the name suggests you, these are the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously, takes place hand in hand. Okay, so before we start the discussion, detailed discussion of this chapter, I would like to tell you about the differences between oxidation and reduction. See, these are very basic concepts of chemistry. We can say oxidation is generally considered as an addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electron, right? And on the other hand, reduction is your removal of oxygen or addition of hydrogen or addition of electron. Above all these, students, I would like to tell you that the electronic concept is the most important one, and this is the basis of other all concepts of the oxidation as well as reduction. Fine. So let's start with the text of the chapter. As you can say, the first sentence or first quotation of the chapter is, where there is oxidation, there is always reduction. Chemistry is essentially a study of redox systems. Okay, because each and everywhere, wherever there is some oxidation reaction is going on, means some oxidizing agent is there, and you know very well with the knowledge of, by the knowledge of your class 10th, that whenever something is acting as an oxidizing agent, it means it itself is undergoing reduction, right? So let's start detailed discussion for the class 11th chemistry. Chemistry deals with various varieties of matter and change of one kind of matter into another. Transformation of matter from one kind to another involves chemical reactions, and one of the most important category of reactions is redox reactions, which we are going to deal with this in this chapter. A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with redox reactions. Plenty of phenomena, right, which are taking place in your body, within the body. Okay, many metabolic reactions, or I can say almost each and every metabolic reaction is some sort of redox reaction. All right. So these reactions find extensive use in pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical, and agricultural areas, right? Metallurgical means I think you know all these terms very well. Pharmaceutical related to your medicines, biological, industrial for the manufacture, metallurgical for the extraction of metals from their ore, and agricultural for production of food, right? The importance of these, yeah, the importance of these reactions is apparent from the fact that burning of different types of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacture of chemical compounds like caustic soda. I hope you people know the formula of caustic soda. It is NaOH, right? Operation of dry and wet batteries. Dry batteries and wet batteries will study in detail in your chapter, means in class 12th chapter electrochemistry. All right, the batteries and corrosion of metal also will discuss over there only. These all fall within the purview of redox reactions. Of late, environmental issues like hydrogen economy. What is hydrogen economy? When we use liquid hydrogen as a fuel, right? So everything about the hydrogen economy, like production of hydrogen and then consumption of hydrogen, this all come under the purview of the redox reactions. And development of ozone hole, what started figuring under the redox phenomena. You all must have heard about the ozone hole, right? And the case of ozone layer depletion. Okay, so all these important things which directly or indirectly affect our lives come under the concept of redox reactions. Classical idea of redox reactions and oxidation, as I have already told you, that addition of oxygen or reduction of removal of hydrogen, right, or simply removal of electron is your
oxidation. So various examples are there. I'm not going in very detail because you people are already well learnt about this. Removal of oxygen, removal of electronegative element from a substance, or addition of hydrogen, or let me add right now, addition of electron or addition of electropositive element. This all see, addition of electron is directly related to all these, or I can say addition of electron is the basis of all these categories, right? Removal of oxygen जब आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? Oxygen is an electronegative element, right? तो जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं, it means आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब आप रिमूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पहले से इलेक्ट्रॉन खींच करके रख रहा था उसको आपने हटा दिया. इट मींस अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? स्पीशीज के पास है, कंसर्न्ड स्पीशीज के पास है. अगेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. फाइन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक बहुत लेस रिएक्टिव, बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला सब्सटेंस है, उसको आप ऐड कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा. फाइन. एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे आपके अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखते हैं. इनको जब आप किसी से ऐड करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन दे करके आएंगे. अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो इन सब का बेसिस एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है. आप इसको अलग अलग नजरिए से पढ़ सकते हैं, बट इफ यू हैव रेड द लेक्चर्स ऑफ चैप्टर केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, देन इट इज डन. ओके, यू नीड नॉट टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. वो अपने आप डिराइव कर पाओगे ऑन द स्पॉट. ओके, हालांकि इसको एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई वाली बात नहीं है. सो लेट्स मूव अहेड. इसी तरीके से जैसे अभी रिडॉक्स रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे थे, ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया हुआ है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल. ऑलराइट, ओवरऑल व्हाट इज दिस? Overall removal of electron. Fine. Overall removal of electron is your redox reaction, oxidation. Now let's see this sample problem 8.1. In the reactions given below, identify the species undergoing oxidation and reduction. Can you people do? Yes, definitely you can do. Take the first reaction. H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S. All right. So from here H2S to formation of sulfur is taking place. What is happening here? Removal of hydrogen. It means it is reduction. And from chlorine to HCl, addition of hydrogen is taking place. It means it is reduction. All right. The substance which is undergoing reduction is called oxidizing agent. Chlorine is an oxidizing agent. And the substance which is undergoing oxidation is called reducing agent. Yes. Let's see another example. Okay, the second reaction. 3FeO4 plus 8Al gives 9Fe plus 4Al2O3. From Fe2O3 to Fe, formation of Fe is taking place. Removal of oxygen means reduction. And from Al, that is aluminium, to aluminium oxide is going to be formed. That is your addition of oxygen, oxidation. In the third part also you can see sodium is undergoing reduction to form sodium hydride, and hydrogen is undergoing oxidation to form sodium hydride. Okay, and why I can say hydrogen is undergoing oxidation? First thing, because hydrogen is a reducing agent. Second thing, see here, addition of okay, it was removal of electropositive. Your Na is an electropositive element. तो electropositive element सोडियम का तो हाइड्रोजन ऐड होने पर रिडक्शन हो रहा है, राइट? बात समझ में आ रही है? सोडियम is undergoing reduction, addition of hydrogen, and hydrogen आपका reducing agent है. तो substance which is undergoing or the substance which is oxidizing agent is undergoing reduction, and substance which is reducing agent is undergoing oxidation. Simple. ठीक है? So I hope all these things are clear to all of you. Let's move forward.
Redox reactions in terms of electron transfer reactions. I have already told you that loss of electron is your loss of electron is oxidation. Sorry. And addition of electron is reduction. You can see here in the reaction of Na plus Cl2, Na plus O2 and Na plus S. Okay. Fine. Let's do from here on the basis of electronic concept, just see new definitions of oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. Oxidation is your loss of electron by any species. Reduction, gain of electron by any species. Oxidizing agent, acceptor of electrons. Reducing agent, donor of electrons. Okay. Problem 8.2. Justify that the reaction 2Na plus H2 gives 2NH is a redox reaction. So what can we do? Since in the above reaction the compound formed is an ionic compound, which may also be represented as Na plus H minus. This suggests that one half reaction is, what is half reaction? In half reaction we represent oxidation and reduction separately. Okay, so this is your oxidation half. 2Na gives 2Na plus 2 electrons, and the reduction half will be H2 plus 2 electrons gives 2H minus. Just add both of these parts, so you will get 2Na, means the resultant will be the original reaction. 2Na plus H2, electrons will get cancelled to give 2Na plus and 2H minus. So 2Na plus and 2H minus can be written as 2NH. Understood? Any problem? Fine. Competitive electron transfer. This is one of the most important things and most significant for your class 12th electrochemistry. Okay, यहाँ से आप देखेंगे Daniel cell बनाना, because see, sodium is also have tendency to lose electron, potassium is also having tendency to lose electron, zinc is also having tendency to lose electron, copper is also having tendency to lose electron. But who is having greater tendency to lose electron? Right? Or which metal atom is having lesser tendency to lose electron? Here we will get the idea of this thing. All right, that is competitive electron transfer reactions. See, let's do one thing. आप ने ये प्रैक्टिकल क्लास 10th में किया है. एक बीकर लीजिए and put copper sulfate solution into it. You know, copper sulfate in aqueous form will form blue color solution. आप इसमें एक जिंक का स्ट्रिप डाल दें. Consequently, the reaction will be CuSO4 plus Zn to give ZnSO4 and Cu. Right? Means actually what is happening? Actually zinc was in solid state initially. It is replacing the copper 2 plus ions from the solution to form zinc 2 plus ions and copper. What does it mean? यहाँ पर zinc ने formation of zinc ions is taking place on the, means this is oxidation of zinc, removal of electron is taking place from the zinc atom, right? But this oxidation of zinc is done on the expense of reduction of copper 2 plus. Copper 2 plus ions are reduced. All right.
So I think it is clear to all of you. Fine. It means it shows that zinc is having higher tendency to undergo oxidation as compared to copper. All right. कॉपर के कंपैरिजन में जिंक का ज्यादा टेंडेंसी है टू गो फॉर ऑक्सीडेशन. इसी तरीके से वेरियस रिएक्शंस करके आप ये पता कर सकते हैं. हालांकि अभी मैं बताता हूं आपको इसके बारे में और बेटर तरीका. In reaction 8.15, zinc has lost electron to form Zn2 plus, and therefore zinc is oxidized. Evidently, now zinc is oxidized. If zinc is oxidized, releasing electrons, something must be reduced. That is your copper. So I have already told you about this. Yeah. At this stage, we may investigate the state of equilibrium for the reaction represented by equation 8.15, the same zinc and copper reaction. For this purpose, let's place a strip of metallic copper in a zinc sulfate solution. अभी आप क्या कर रहे हैं? इस बार जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आप कॉपर का स्ट्रिप रख दीजिए. राइट. जिंक सल्फेट ऑलरेडी कलरलेस सॉल्यूशन. Place a copper strip. Nothing will happen. Okay. This thing you know by the knowledge of your class 9th and 10th. So no visible reaction is noticed, and the attempt to detect the presence of Cu2 plus ions by passing H2S. अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है थोड़ा बहुत Cu2 प्लस बना हो, उसकी वजह से जो ब्लू कलर आया हो वो आपको दिख ना रहा हो. ये भी तो पॉसिबिलिटी है. तो एक चीज और हमने टेस्ट कर ली. हमने इससे H2S गैस पास कराई. H2S गैस पास कराने पर क्या होगा? अगर कॉपर 2 प्लस आयंस ट्रेसेस में भी प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है, तो इट विल फॉर्म द ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड और कॉपर 2 सल्फाइड, आई मस्ट से. ऑलराइट. तो हमने H2S गैस पास करा के देख लिया. फाइन. ये वही H2S है जिसको हम किप्स सेपरेटस से बनाते हैं और इसका रॉटन एग स्मेल होता है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सो कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड का या कॉपर 2 सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आना चाहिए था, जो कि नहीं आता है. इसका मतलब बिल्कुल भी कॉपर 2 प्लस आयंस प्रेजेंट नहीं है वहां पर. अंडरस्टूड? Cupric sulfide has such a low solubility that this is an extremely sensitive test. Yet the amount of Cu2 plus formed cannot be detected. मतलब ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है क्योंकि बहुत लेस सॉलिबिलिटी होती है Cu2 प्लस की. अभी मैं आपको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आपको वहां पर मैं ये बताऊंगा कि क्यों किसी चीज का प्रेसिपिटेट बनता है और किसी दूसरे सब्सटेंस का नहीं बनता है. तब आप इस सेंटेंस को और अच्छा समझ पाएंगे. अभी ये समझें कि जो चीजें बहुत कम सॉल्युबल या लीस्ट सॉल्युबल होती हैं, इन केमिस्ट्री वी यूज अ वर्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल होती हैं, राइट, उनके लिए उनके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं. तो क्यूप्रिक सल्फाइड इज वेरी लेस सॉल्युबल और इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा. अंडरस्टूड? We thus conclude that the state of equilibrium for the reaction 8.15 greatly favors the production of reactants. Right? Reactant मतलब Zn2 plus बनाने का टेंडेंसी ज्यादा था. अगर आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन में Zn2 प्लस रखा हुआ है तो उससे रिड्यूस होकर के Cu2 प्लस बनने का टेंडेंसी नहीं है. ऑलराइट, लेट्स एक्सटेंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट. अब हम लोग सेम रिएक्शन करने जा रहे हैं कॉपर मेटल और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में. Cu plus AgNO3, ऑलराइट, टू गिव कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर मेटल. ओके, यहां पर जो कॉपर मेटल बन रहा है आपको उसकी वजह से ब्लू कलर ऑब्जर्व हो जाएगा. व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप कॉपर और सिल्वर का पेयर रखते हैं तो कॉपर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गो फॉर ऑक्सीडेशन. मतलब टेंडेंसी टू गो फॉर ऑक्सीडेशन भी कंपैरेटिव है. आपने कॉपर और जिंक में कंपेयर किया, जिंक इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा. आपने कॉपर और सॉरी आई हैव लॉस्ट माय कंसंट्रेशन, या कॉपर एंड सिल्वर लिया तो व्हाट विल हैपन? कॉपर ऑक्सीडेशन करेगा, सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा. तो रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 10th में आप लोगों को एक बताई गई थी, राइट, और उसी रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा बिगर फॉर्म में आप देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट. नाउ सो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस और कौन सा एलिमेंट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गो फॉर ऑक्सीडेशन एंड व्हिच इज हैविंग अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गो फॉर
reduction, right? Another example can be, your cobalt and nickel. Again, you can see the oxidation of cobalt is taking place. At equilibrium, the chemical test reveals that both Ni plus and Ni and 2 plus are present at moderate concentrations. In this case, neither the reactants CO, that is cobalt or Ni plus, nor the products cobalt 2 plus or Ni are greatly favored. एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखिए. इनके electrochemical potentials or standard electrode potentials of cobalt and nickel are not much different. Okay, इस वजह से आपको सॉल्यूशन में कोबाल्ट का भी टेस्ट मिलेगा और निकल का भी टेस्ट मिलेगा. बात समझ में आ रही है? मींस एक इक्विलिब्रियम सा मेंटेन होगा. कुछ आयंस आपको निकल के भी मिल जाएंगे और कुछ आयंस आपको कोबाल्ट के भी मिल जाएंगे. क्लियर? फाइन. This competition for release of electron incidentally reminds us the competition for release of protons among acids. याद करिए acids में क्या होता था? I think we have not studied yet about the chemical equilibrium. वहां पर हम लोग देखेंगे pKa वैल्यू एक निकालेंगे, राइट? एक पर्टिकुलर एसिड है जो ज्यादा H+ देने की टेंडेंसी रखता है, ओके, एज कंपेयर टू सम अदर. और इसी के बेसिस पे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड पढ़ते हैं. तो यही उसी बेसिस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग मेटल और वीक मेटल पढ़ेंगे. वहां पर हमारे पास pH वैल्यूज है, pKa वैल्यूज है टू गिव द स्ट्रॉन्गनेस और टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. और इन केस ऑफ मेटल वी आर हैविंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज. This similarity suggests that we might develop a table in which metals and or their ions are listed on the basis of their tendency to release electron, just as we do in case of acids to indicate the strength of acids. As the matter of the fact, we have already made certain comparisons. By comparison, we have come to know that zinc releases electron to copper and copper releases electron to silver. Therefore, the electron releasing tendency of metals in order जिंक का सबसे ज्यादा, देन कॉपर, देन सिल्वर. क्लियर? एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी वुड लव टू मेक आवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिजाइन मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लेट मी शो यू दैट सीरीज in detail. You will study about this in galvanic cell. See, the competition of electron between metal strips. Metals have to design a class of cells जिनको galvanic cells बोलते हैं. What are galvanic cells? जिनमें केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से होना चाहता है, जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा. ओके, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. सो उन रिएक्शंस की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली इन योर सेल्स, बैटरीज एटसेट्रा, राइट? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर. Students, it's my request for all of you, just Google the electrochemical series and have a look on that. You will find in the electrochemical series, दरअसल बेटा 12th में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एक चीज होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का वैल्यू सेम होता है, जस्ट साइंस आर ऑपोजिट. बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक्सेप्ट कर रखा हुआ है. ओके, आईयूपीएससी ने भी रिकमेंड किया हुआ है. तो उस मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेसिस पे जब आप एलिमेंट्स को अलाइन करेंगे, देन द सीरीज विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और वहां पर सबसे ऊपर आपको फ्लोरीन मिलेगा विद मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड सबसे नीचे आपको लिथियम मिलेगा विद नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, विद मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू. ओके, फाइन. The next topic is your oxidation number.
Oxidation number is nothing, just the formal charge on any atom when all the other elements or all the other atoms of the compound are removed. Okay, और जिसका electronegativity ज्यादा है उसके साथ आप इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए. We will study about oxidation number in detail with few examples. Till then, keep learning, keep studying, and keep watching the videos. Thank you, class.